Namaskar, good morning. I am Avni Katakkar, your host for Conversations Unplugged, powered by Story Scrapers. Meet the author. This segment that we have introduced to you is for inspiring you, motivating you, and bringing onto you different perspectives, beautiful insights from amazing authors. And today, our guest, he is not just an author, like we are not just meeting an author. He is a man of many roles, a mentor, a thinker, a professor, and a storyteller who wears wisdom like his second skin. He is someone who beautifully blends intellect and insight. He's a security expert, he's a professor, he's a runner, and he's an author. We at Story Scrapers are honored to welcome Dr. Rajiv Mathur. Let me just welcome him for you all. Hello, sir. Thank you, Avni. Thank you for having me here. Thank you for very, very kind words. बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. Thank you so much, sir, because most of us, we just wear one hat and we flaunt it. You are wearing so many hats and you make it look so graceful effortlessly. So we had to have you with us. Thank you so much. Thank you very much. And thank you because we know that you are having a packed schedule and you still take out time for us. It's a big deal and pleasure for Team Story Scrapers. So I am also welcoming you on behalf of Team Story Scrapers. Thank you. Thank you. It's an honor. Yeah. So, sir, we know that you have many roles to play. You are here, there, everywhere. And with that, our audience would like to know a lot of things about you so that they get a dose of inspiration or motivation if they want to start writing or whether they want to own many roles like you. So, So, yes, yeah, please the go ahead. first, जब जब आप ये बात मुझे बोल रहे हैं तो मुझे एक पुरानी बात याद आती है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन. तो कहीं ऐसा ही आपने इतनी तारीफ कर दी और आई एम सो नर्वस कि मैं मेरे साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन और मैं कुछ बता ही ना पाऊं आपके सामने और आपकी इतनी अच्छी ऑडियंस के सामने शब्द ही ना निकले कुछ. No, no, sir. You are being very kind. You are not jack of all trades, you are master of all trades. And that's why we have you with us because the audience will slowly get hooked to the session. And they most of our questions are sent by our audience because हर किसी को कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी होती है बाबा मुझे इस ऑथर को ये पूछना है मुझे इन्हें ये पूछना है so there are many questions if you allow me I'll go with the first question. प्लीज. Yeah, like I presented to the audience that you are a man of many roles. So from a security professional to a professor to an author, that's quite a journey. And I hope that's an amazing journey. So could you just take us through those key milestones and transitions all through it? And we would like to know and we would like to get motivated about the shift in your career, each shift. Thank you, and it is a very interesting question. I think to start with, I will go back before the professional career started. I have seen, I've been brought up in a culture जहाँ पे safety, security was a way of life. You know, I've lived in an industrial township. My father used to work in that industry, so I've seen that culture. To give you an example, where my father used to work in the early 80s and late 70s, and so उस जमाने में भी उनकी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, while driving a two wheeler without helmet जाना was not allowed.
Oh. सो मुझे वहां से समझ आता था, अच्छा ये क्यों जरूरी होता है, सेफ्टी क्यों जरूरी होता है। एंड जब मैंने अपनी पढ़ाई खत्म करी और मुझे ऐसा लगा कि अब आई हैव टाइम टू पिक अप अ करियर, एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो फायर सेफ्टी में डील करती थी। सो आई थॉट परहैप्स दिस इज वेयर आई वांट टू ऑलवेज गो. So that's how I got into the career of security and safety and risk management. Um, while I was in the early stages of my career, मुझे धीरे धीरे ट्रेनिंग लेने में, कोचिंग करने में, मेंटरशिप करने में अच्छा लगने लगा. एंड आई वाज सो फॉर्चुनेट एनफ in one of the organization that I used to train, I should say train, or actually explain about the product to the senior management who used to join the organization. Being a mid-level manager, and I used to teach, train people joining at the post of vice presidents, presidents, etc., about the product. And मुझे लगा, this is something that I'm liking it, and I being in this sales वर्टिकल, लोगों से बात करना अच्छा लगता था, और इस तरीके से ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला. Now, further down in the career, I got the opportunity to, one more time, I got the opportunity to teach the management students, and I was representing an institute, and I used to go and teach security to the management students. So this happened about 21 years ago. And then I thought, okay, this is something that I'm really liking. And since then, I'm always been an advocate of education in the security domain for two reasons. One is that till a few years ago, there was no formal education in the field of security. We had a fire engineering institute in Nagpur long back, but there was no formal education in security back then. And I got the chance to teach security to management students. And then I thought, yeah, this is a brilliant idea, because lately security has become a core function of all the businesses, and there is no formal education. I mean, you do MBA in marketing, HR, finance, hospitality management, supply chain, but not security. And that was one institute that used to teach security. From there, that I another cap after security or safety was for teaching, or a professor of practice that I was wearing. And I'm till date, I really enjoy, and whenever I get the opportunity to visit any university, college, even school, and I go and teach. So that's step two of the journey. Being an author, being a runner, that happened quite simultaneously, and that's perhaps the beginning of my author journey as well. So about 3-4 years ago, um, so after a certain age, you should go and get your all medical checkups, regular checkups done. So we thought that January is the best. That's the New Year gift. We should, me and my wife, we thought कि यार ये सब करना चाहिए. So one of these few years ago, one of these Januaries, we went and got these all regular checkup done. और उसके जो रिजल्ट आए, जो पैरामीटर्स आए, वो सब हिले हुए थे. I thought ये तो, and we went to the doctor, and we asked her कि ये सब हिला है, सब क्या करने का है. She said, दवाई 1, दवाई 2, दवाई 3, दवाई. I said, what do we do without it? This is too early to start all the medicine. तो उन्होंने कहा कि change your lifestyle, do something about fitness, do something about physical activities, etc. So I started running. मतलब I've been a sports person throughout my life, but वो कभी-कभी जब आप प्रोफेशन में इतना घुस जाते हैं, तो ये सब धीरे-धीरे छूट जाता है. टाइम निकाल नहीं For पाते बेसिकली. for one reason. लेजी हो जाते शायद कभी-कभी कि काम से फुर्सत ही नहीं है. हाँ, for one reason or the other ये छूट जाता है. But
but I have played cricket till the age of I think 43, 44 मैं regular cricket खेलता था. But धीरे धीरे so तो कुछ इंजरी हुआ, कुछ ये हुआ, तो सब धीरे धीरे खत्म हो गया. तो ओके, सो कमिंग बैक, तो उन्होंने कहा कि लाइफस्टाइल चेंज करें तो ठीक हो जाएगा. तो मैंने कहा अच्छा 3 months. सो आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू फिटनेस, थोड़ा थोड़ा वॉक रन करना शुरू किया. तो मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि रनिंग इज द इजीएस्ट, कोई वो नहीं है, आप शुरू करिए. सो आई स्टार्टेड. आई वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय अ जेंटलमैन कॉल्ड रमनदीप ओबराय. उन्होंने ही इज वन ऑफ द in the senior citizen category, he is one of the most famous runner जो पूरा मैराथन भी करते हैं, उससे ज्यादा भी करते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं हिमालयन. तो मेरा एक जो यूट्यूब चैनल है, मैं उनका उसमें इंटरव्यू ले रहा था. तो ही सेड दैट आई स्टार्टेड रनिंग एट द एज ऑफ 53. आई सेड सर, आई प्रॉमिस यू, आप मैं उससे 1 साल कम में भागना शुरू करूंगा. सो दैट इन्फ्लुएंस्ड मी देन. So I started running. Simultaneously, what happened is that my daughter, who is an avid reader, she took me to the World Book Fair in Delhi. January, February में होता है वो. And she bought several books for her, and she bought few books for me as well. कि आप पढ़िए इसको, you should read. And like that, the same excuse कि जब प्रोफेशन में इतना बिजी थे तो सिर्फ दफ्तर की और काम की किताबें और रिपोर्ट्स बनाना और लिखना और पढ़ने के अलावा कुछ और पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता था. बट शी इंसिस्टेड मी कि आप पढ़िए. So I started reading that way. So two things were happening simultaneously. I was running and I was reading. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक बड़ी अच्छी बुक एक है, द रनिंग इफेक्ट, बाय एन ऑथर कॉल्ड श्वेता समोटा. she's a writing coach as well. तो उनकी वो किताब मुझे मिली बिकॉज दोनों चीजें साथ साथ हो रही थी. तो उस बुक में लिखा था दैट सक्सेसफुल पीपल डू 3 things. दे रन, दे रीड एंड दे राइट. मैंने कहा 2 चीज तो हो गई, और अब एज हो गई कि सक्सेसफुल भी होना चाहिए. So I started writing. So that's how the author journey became. So this is the entire journey where all these things happened. All these things happened simultaneously. So it's not one after the other, Avni. It's all together, which still happens. It further reminds me of another very senior, lady executive, finance head, a CFO of a very large organization, and she said in one of the interviews I was talking to her, and she said that if you want to enjoy your work all the time, you should do 3 things which are out of your work. And she said one should be an intellectual hobby, one should be a physical hobby, and third should be a creative hobby. तो आई सेड ये तो मैं सारी चीज कर रहा हूँ. मैं फिजिकली भागना शुरू कर रहा हूँ, इंटेलेक्चुअली रीड राइट रन कर रहा हूँ, क्रिएटिव में यूट्यूब चैनल कर रहा हूँ. तो मुझे लगा कि अब शायद सक्सेसफुल होने का टाइम आ गया है. तो दैट्स हाउ द जर्नी हैपेंड इन लास्ट सो मेनी इयर्स. Now that you have told us the journey, आप जब बता रहे थे तभी भी वो जर्नी इतनी मजेदार साउंड कर रही थी. As I was listening it from the ears of a storyteller, and I could hear a storyteller in front of me. So that's, आप शायद इस पे भी कभी बुक लिख सकते हो, because your journey of blending all these things together is just too good. Because there's our audience, Neha, saying wow. Thank you. Thank you. So yes, Thank you. like I said, I'm amazed because you said it so pragmatically कि नहीं ऐसा 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 हुआ, but this is actually so inspiring for us कि हाँ इतनी चीजें साथ में हो सकती है. Thank you. And with that comes our question number 2. That is, now we know that you are man of many roles, you don't so many roles. So I just wanted to know, because all your roles are different. ऐसा नहीं है कि आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो तो आपका जो ऑथरशिप रोल है वो सेम है, उससे मिलता जुलता है, और यू आर अ फिटनेस एंथुजियास्ट तो वो भी मिलता. नो, यू मेड इट साउंड so effortless. But then how do you manage such diverse and demanding roles? Like, is there any uh, secret sauce or a personal philosophy that you follow that you would like to share with us and our audience? नहीं, सीक्रेट सॉस कुछ नहीं है, बट जैसा मैंने आपको अभी बताया दैट इफ
if there has to be efficiency in your profession, you should have three hobbies. और ये तीनों चीजें इत्तेफाक से मैं साथ साथ कर रहा था. हम्म uh, you know going and teaching to management students and otherwise it happened simultaneously. बट वो प्रोफेशन से काफी रिलेटेड था, सो आई वुड से दैट वो डिमार्क नहीं करता है प्रोफेशन को. बट हम्म दिस यूट्यूब थिंग हैपेंड ड्यूरिंग कोविड. Then writing happened after that. Then running happened after COVID. तो मुझे ऐसा लगता है that all these activities or whatsoever you want to do, whether it any creative activity, music, whatever it is, लेकिन तो whatever you do, you should do it wholeheartedly. Half heartedly कोई काम करेंगे. अगर आप चीज एक कर रहे हैं, सोच रहे हैं दूसरे के बारे में, या दूसरा कर रहे हैं और सोच रहे हैं तीसरे के बारे में, तो किसी चीज करने में मजा नहीं आएगा. तो जो आप कर रहे हैं बस वही करिए और मजे से करिए और पूरा इंटरेस्ट के साथ करिए. So everything becomes fun. And of course, I think one of the most important thing that you should always remember in life that let's not go overboard in whatever we are doing. काम कर रहे हैं तो पता चला कि 16 18 घंटे काम कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे, और यूट्यूबिंग कर रहे हैं या राइटिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वही करते जा रहे हैं. तो उसमें भी कभी कभी दिक्कत होती है. यू शुड नो वेयर टू स्टॉप and shift your gears, and that makes it a little easy, and that's how I do. But it is very contrary to the style that I mean, style is a बहुत बड़ा शब्द हो गया. I'm not a professional writer or so, but तो जब भी मैं सब लिखने के लिए बैठता हूँ, उसमें भी ऐसा होता है कि आप 2 4 4 5 5 दिन, एक एक हफ्ता, कभी आपको समझ नहीं आता है कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है. लेकिन जब आप लिखो तो वो रात को 8 बजे फ्लो में लिखने फ्लो बैठी है, इट फ्लो हो जाता है. सुबह सुबह 9 कब बज जाते हैं पता नहीं चलता. But obviously, ये वाला flow, it cannot come to you on a Wednesday evening. It has to come to you on a Friday Yeah, evening or a Saturday. That's how it happens. So बहुत सिंपल है. मतलब अगर इसकी इसकी कोई स्ट्रेटेजी या कोई सीक्रेट सॉस है या कोई रेसिपी है, so the answer is no. But जो काम करो बस वही करना चाहिए. So that's how at least I do. Now, those were your very honest words and those were resonating because हम सब यही फील करते हैं कि there are many days जब दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पाते. तो you were Yes. right कि हाँ, जब there's a flow, just go with it. And for our audience, it is very true that don't just like जैसे आपने कहा कि 16 18 घंटे कर रहे हो, तो just don't do it for the sake कि हाँ करना है. मजे से करो, because when you enjoy something, I believe the people who are either watching you, reading you, or even just sitting beside you, they enjoy you, they enjoy being with you when you are enjoying what you are. Yes. Yes. Absolutely amazing words. And I wanted to ask that now you have told us how did you start writing. But what we want to know now is that was there any particular moment, any memory, or any incident that just triggered your writing journey as an author? आपने कब मतलब ऐसा कोई था मोमेंट या चीज की नहीं अब मुझे ऑथर बनना है, जस्ट राइटिंग इज लाइक ओके. हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब मैं वो बुक पढ़ रहा था, द रनिंग इफेक्ट, तो उसमें लिखा था दैट सक्सेसफुल पीपल डू रीड, राइट एंड रन. तो मुझे लगा कि मैं रीड कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, राइट नहीं कर रहा. तो अभी टाइम आ गया, सक्सेसफुल बनो, कुछ करना चाहिए. देन आई थॉट कि क्या लिखना है. मतलब तो आप सिक्योरिटी रिपोर्ट लिखा लीजिए, सिक्योरिटी डिजाइन का कुछ कॉन्सेप्ट लिखा लीजिए, कोई ईमेल अच्छा से लिखा लीजिए, कोई कोई लेक्चर सिक्योरिटी पे देना वो लिखा लीजिए. तो मतलब आई थॉट कि ये तो ऐसा तो मैं करी, दिस इज व्हाट आई बीन डूइंग फॉर डिकेड्स, 2 डिकेड्स, 3 डिकेड्स. लेकिन बुक कैसे लिखना चाहिए. तो as you know that I also have a YouTube channel called Jaane Anjaane with Rajiv Mathur.
And I said that उसका मैं उन दिनों शायद सीजन 2 कर रहा था, तो मुझे लगा that season 1 has some amazing stories of 24 stalwarts of the security industry. That's, I mean, I have Wow. 24 stories instead of one. So I picked up all those 24 episodes, converted them into stories, micro biographies to say. तो वो माइक्रो बायोग्राफीज को कन्वर्ट करके दैट वाज द फर्स्ट बुक विच हैड 24 स्टोरीज। नाउ उसके पीछे उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसा आपने अभी मुझे थोड़ी देर पहले बोला कि आपको दूसरी बुक का नाम अच्छा लगा, पहली बुक के नाम के लिए भी एक बड़ी अच्छी स्टोरी। द नेम ऑफ द फर्स्ट बुक इज कॉल्ड पॉकेट स्क्वायर। Okay. Yeah. सो सो यू नो इट वाज वेरी सिंपल कि मैंने उन जो स्टोरीज थी, जो इंटरव्यूज थे, उसको rather than a डिस्कशन, इंटरव्यू में दो लोग बात करते हैं, उसको एक एक स्टोरी में बनाया और लिख दिया। बट व्हाट शुड बी द नेम? द ऑब्वियस चॉइस वाज जाने अनजाने, बिकॉज दैट वाज द नेम ऑफ द चैनल। Channel. तो Yeah. मुझे लगा कि जाने अनजाने तो सीजन 2 भी है और शायद सीजन 3 भी है, और पता नहीं कब तक मेरा करने का आगे मन करेगा। जैसे अभी सीजन 3 चल रहा है आजकल, लेकिन थोड़ा ब्रेक है, बट सीजन 3 शुरू हो गया। सो जाने अनजाने मुझे लगा कैन नॉट बी द नेम, Hmm. व्हाट शुड बी द नेम? then then the name pocket square. So my friends, in those time I was a part of a organization, and I'm very very fond of wearing a pocket square, like even today. So तो उन्होंने कहा, यार तू हमेशा पॉकेट स्क्वायर लगाता है, बुक का नाम पॉकेट स्क्वायर होना चाहिए। आई सेड दैट्स अ गुड आइडिया, बट कुछ तो लॉजिक हो इस बात का, देयर हैज टू बी सम लॉजिक अबाउट इट। Yeah. So then two things were so connected to this name are as follows. Number one, जो 24 मैंने इंटरव्यूज किए उस दौरान, it was COVID and all interviews were like online. So and I requested all the stalwarts of the industry कि साहब, we all know you in all formal dressing, talking serious subjects. This is a very informal discussion. So we will be wearing Indian ethnic, ये जैकेट कुर्ता ऐसा लगा के और पॉकेट स्क्वायर। तो मैंने नोटिस किया कि उन ऑल इन ऑल दोस 24 एपिसोड्स आई एम वेयरिंग अ डिफरेंट पॉकेट स्क्वायर। सो दैट वाज व्हेन आई सेड दिस इज अ कोइंसिडेंस। जब वो शूट किया था, तो जब वो रिकॉर्ड किया था, तो ऐसा आई हैड नो आइडिया। हाँ. एंड सेकेंडली आई थॉट पॉकेट स्क्वायर ठीक है, थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए, बिकॉज इट स्टिल शुड मेक सेंस टू द बुक। And then I realized that pocket square is only visible 25% outside your pocket, but the 75% is kind of invisible. And that's the book is all about, because वो जाने माने लोगों की अनजानी बातें तो उस इंटरव्यूज में और वही उस बुक में, तो मैंने उसको दोबारा लिखा। I rewrote all those 24 stories. If those characteristics, hobbies, traits, life journey of those people, अगर वो पॉकेट स्क्वायर होती और उसको हम निकाल के दूसरी तरीके से देखते, तो वो कैसा लगता? So that's how the pocket square name of the first book. उसके लिए स्पेशली एक पॉकेट स्क्वायर बनाया गया, उसका उसका फोटो लेके उसका Oh, कवर पेज wow. बनाया गया। So all those efforts were inside that book. So that's how Wonderful. that's how the journey of writing started, and it was a long year and a half kind of an episode, but I Hmm. think I feel it was a satisfying start, and मुझे अच्छा लगा। Absolutely, absolutely. And for our audience, yes, Rajiv sir has his YouTube channel, Jaane Anjaane with Rajiv Mathur. You can like and subscribe it on YouTube. And अब जब मैंने आपकी ये कहानी सुनी कि how did pocket square come to the birth, come to life, uh, ये ना मेरी तरफ से I guess audience will agree with me. You should not just start interviewing. You are doing interviews of people, but you should start स्टोरी टेलिंग ऑन यूट्यूब, बिकॉज आप जिस तरह से चीजें बता रहे हो, दे डोंट साउंड लाइक यू आर आंसरिंग टू माय क्वेश्चंस और वी आर जस्ट हैविंग अ live session or talk session. It's just that you are just randomly telling me stories and I am just hooked to it. Anybody who will Right. watch this episode today or day after or later is going to agree with me that this stories that you are telling us are going to stay with us forever. Thank you. So kind of you. Thank you. Thank you. And now, because now we know about Pocket Square,
we are going to discuss about your latest book, 1000 Days, a story of a myth. And like अभी हम जब बात कर रहे थे, I was telling sir कि what made me buy that book is the title. I don't know why जब मैं book store गई, that title was very enticing for me. मुझे ऐसा लगा कि हाँ इसमें कुछ तो कहानी होगी. ये टाइटल बता रहा है कि ऐसा कुछ तो अच्छा वाला प्लॉट होगा, कुछ अलग होगा, and I had to get it. Though I haven't read it because I am waiting to meet Rajiv sir, get it author signed, and then I'll start reading it. But yes, the title itself is very intriguing, and we want to know that what's so special about that title or that plot. Anything that you would like to tell us to glorify your latest book. Thank you, Avni. आप you've been so kind with your words. मैं भूल जाता हूँ मुझे आगे क्या बात करनी है. Thank you so much. Yes, 1000 days, a story of a minute. So जब हम book launch कर रहे थे on 10th of November last year, and my very dear friend and who was also the moderator for the session, and she asked me, what is the difference between your first book and the second book? और मैं उस बात को यहाँ पे भी कहना चाहता हूँ that after I finished the second book, what I feel is that his first book was written by 24 people. It is actually the second book जो मैंने खुद लिखी है. So that's what the major difference is. As the name suggests, Avni, it says 1000 days, a story of a minute. So it is a situation that happened in a minute, और उसके बाद 1000 दिन. This is a personal experience. This is a personal life. This is my story. And so many people around me. This is a story of hope. This is a story of relationship. This is a story of kindness. This is a story of friendship. This is a story of responsibility. This is the 1000 days are few months before the COVID started, and few weeks later after it became an endemic. तो एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि मिरेकल से कम नहीं है, एंड आई कॉल इट अ मेडिकल मिरेकल. दिस बुक इज आल्सो अ ट्रिब्यूट टू the medical fraternity, to the amazing doctors. I call them in the book, and even otherwise I call them medical magicians. वो ऐसे ऐसे कमाल काम करते हैं, स्पेशली कोविड के दौरान जो सब किया. और जब आप बुक में पढ़ेंगे कि इस इंसिडेंट्स में देयर इज अ डॉक्टर who is very well, kind of who is a family friend, and what she did when she did is nothing less than a miracle. So I do not know if Dr. Parinita Kaur is watching us live, but I always thank her and the entire and her team and everybody who was present at that particular situation, and even otherwise the entire medical fraternity, and it is the book is also a tribute to them. The book also reflects that there is always a hope in tough times. The book also talks about how beautifully the relationships that you should nurture, and you should cherish every moment that you get in life. Sometimes the people say, some of them, especially my family, say it sometimes it's like a sad book, but it is not. तो इससे ज्यादा मैं कुछ बताऊंगा ना. अपनी मैं जब जब इस किताब के बारे में बात करता हूं तो मैं हमेशा इसका जो स्पॉइलर है वो बता देता हूं, और सिर्फ मैं जानता हूं कि मैंने अपने आप को कैसे रोका है कि मुझे इसकी स्टोरी नहीं बतानी है, क्योंकि आपने मुझे इंस्ट्रक्ट किया, डोंट टेल द स्पॉयलर्स. एंड तुझे अगर मुझे स्पॉइलर नहीं बताना है तो उस बुक के बारे में क्या बताना है मुझे यही नहीं पता है. सो प्लीज गो एंड रीड इट, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू hearing your views about the book, everybody who's watching it.
मैंने इसीलिए आपको कहा स्पॉयलर्स नहीं बताना, बिकॉज़ आई बीइंग वेरी सेल्फिश, आई वाज़ लाइक अगर मुझे स्पॉइलर पता चल गया, तो मेरा बुक रीडिंग का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा शायद। तो आई जस्ट सेड कि नो, डोंट टेल अस द स्पॉयलर्स बिकॉज़ वी वांट टू रीड इट, वी वांट टू नो व्हाट इज़ इन इट एंड we want to know what's the conclusion of the book. So yes, I Yeah, hope our readers who are watching this will buy it, will read it, and will certainly review it as soon as possible. I hope so. Please buy the book. Send me the reviews, and Avni, thank you so much for requesting everyone to buy it. It is an honor for me. Because now तो our audience knows, मतलब शायद आपकी बातें सुन के भी उनको पता चल गया होगा कि if the author like talks storytelling, imagine how he must have written his book. क्योंकि आप जो बता रहे हो वो भी कहानी के सुर में बता रहे हो, तो कहानी पढ़ने में हमें बड़ा मजा आएगा। Thank you. Yeah, and there's a question that say, I know I am very naive to ask this question, but then what does your writing routine looks like? Like, are you a very disciplined kind of a strict, you follow a strict routine, or you write in bursts of inspiration? What is that? Haphazard is the answer. It is haphazard in the answer. As I said, अच्छा एक्चुअली इसका आंसर ही बहुत मुश्किल है क्योंकि जब आपने ये सवाल मुझसे किया और इमीडिएटली क्या होता है कि आप योर लास्ट जो जो लास्ट रूटीन होता है और जो लास्ट आपकी हैबिट्स होती हैं वो इमीडिएटली सरफेस करती हैं सो मैंने आंसर बोला हैफिजड हैफिजड वाज is applicable when I was writing the second book 1000 days. But I think I was very disciplined when I was writing the first book for two reasons. One, I was writing the stories of the most disciplined people in the country. And secondly, I had a target to finish. Of course, second book का भी एक target था, but वहाँ पे मुझे फलाना डेट को ये खत्म करना था. वहाँ पे मेरे पास I had the content in the first book. So I had the content. मुझे वो इंटरव्यूज को बार बार 6, 7, 8, 10 बार देखना था और उसका स्टोरी बनाना था. उसको जब रीराइट किया एज अ पॉकेट स्क्वायर तो वो डिसिप्लिन्ड होता था कि हाँ रोज रात में 1 घंटा लिखना है या वीकेंड पे 2 घंटा लिखना है. बट एज आई सेड द सेकंड बुक आई थिंक उसमें उसमें 11 चैप्टर हैं. तो ओवर अ पीरियड ऑफ से 1 ईयर और सो मैंने वो 11 सिटिंग्स में बुक खत्म करी होगी. मतलब या तो लिखा तो 2 दिन 3 दिन लिखा या नहीं लिखा तो 1 महीने तक आई कुडंट टच because there's also a little a struggle that I had gone through those 1000 days. तो जब मैं इस बुक को लिख रहा था तो वो वापस मेरा जो दिमाग था वो वापस वो स्ट्रगल डेज में चला जाता था. वो थोड़े से परेशानी के दिनों में चला जाता था. तो बहुत it was sometimes very taxing. तो जब आप उस जोन में चले गए तो फिर आप you continue writing that way. So मुझे ऐसा लगता है that a creative mind perhaps has no rule, no discipline, no timelines, no nothing. जब वो creativity बाहर निकलनी शुरू होगी वो तभी होगी. I mean you can't say your mind okay let's write no let's be little creative कुछ अच्छा सोचो. You can't वो नहीं तो वो नहीं हो सकता है. So एंड पॉसिबली जब हम ऐसे सोचते हैं कि नहीं अब लिखना है, आज मुझे लिखना है, उस दिन वो एग्जैक्टली नहीं होता. द हाँ क्रिएटिविटी डज. वो कुछ नहीं होगा. आप अपने स्टडी रूम में बैठिएगा, आप लैपटॉप खोलिएगा और ऑफिस के 8-10 मेल और 3-4 डॉक्यूमेंट देख के उसको बंद कर देंगे कि आज कुछ क्रिएटिव नहीं हो रहा है. और कभी कभी जब मन करता है लिखने का तो आप कैसे भी लिख सकते हैं. आई एम ट्राइंग सो आई एम ऑलरेडी थिंकिंग कि अगर हम इसको रूटीन बना लें तो ये आपकी राइटिंग की हैबिट बन जाएगी. जितने भी बुक्स और अच्छे
ऑथर्स को मैं पढ़ रहा हूँ और सब लोग मुझे हर जगह से ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि आपको एक रूटीन होना चाहिए ना, आपको शाम को 7 से 8:30 बजे तक लिखना ही है। तो हम्म। तो शायद आपको वो आदत बन जाएगी और आप वो शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा अभी तक नहीं हुआ है और मैं ऐसा मतलब आई एम नोबडी टू काइंड ऑफ गिव एनी एडवाइस, और ये मैं ऐसा कह नहीं सकता हूँ कि तो मैं एक्सीडेंटल राइटर हूँ, इसलिए तो मेरा कोई रूटीन नहीं है, कोई कोई स्केड्यूल नहीं है और कोई तरीका नहीं है लिखने का। यू आर बीइंग टू काइंड। और आप ये जो अभी बोल रहे हो, ट्रस्ट मी, यू आर बीइंग द फेस ऑफ कोलोसल ऑथर्स एंड राइटर्स। बिकॉज जितने राइटर्स को मैं जानती हूँ, मोस्ट ऑफ देम वो यही कहते हैं कि देयर इज नो रूटीन, क्रिएटिविटी आती है, हम लिखते हैं। that's that's the whole thing that goes side or outside the life of a writer and an author. And now that we know that you read a lot, you said your daughter is also an avid reader. So I believe you read many, many, many books. And to let us all know, is there any one book that has left an impact on your life or a worldview? So could you just tell us about that book? How did that stand out for you? Yeah, so the last book has left a deep impact on my life. Any one which is the last one that I've read. So जो भी मैं जो भी मैं पिछली किताब पढ़ी होती है वो मुझे सबसे अच्छी लगती है. Okay, so jokes apart, one of course, as I said, that the running effect for me stood out to be a life-changing kind of a book. बट अवनी, अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी जो रेंज है पढ़ने की, मैं बहुत तेजी से नहीं पढ़ता हूँ. बहुत मैं एक अभी लेटेस्ट बुक पढ़ रहा था, डू इट टुडे बाय डेरेस समबडी द ऑथर. एंड उन्होंने कहा कि आपको अगर अच्छा रीडर बनना है तो आपको साल में 100 बुक्स खत्म करनी चाहिए. तो मैंने वो किताब वहीं पे बंद कर दी उसके बाद. तो मुझे लगा कि ये ये नहीं होगा. तो मैं कुछ भी पढ़ता हूँ, मतलब मैं इंदिरा नूई की बायोग्राफी या अब्दुल कलाम की बायोग्राफी, बड़ी इंटरेस्टिंग है दोनों बायोग्राफी, से लेके या महेंद्र सिंह धोनी की बायोग्राफी, मोहिंद्र अमरनाथ की बायोग्राफी से लेकर के मेकिंग ऑफ शोले, मेकिंग ऑफ डॉन, मैनी लाइव मैनी मास्टर्स, एटॉमिक हैबिट्स, गेट इट डन. मतलब मैं कुछ भी पढ़ता हूँ. और आई बिलीव और आपके डिवर्स रोल्स की तरह आपकी जो बुक रीडिंग चॉइसेस है, दे आर सो वेरी डिवर्स. इज वेरी, बट मैं फिक्शन नहीं, मुझे फिक्शन नहीं समझ आता. ओके. एंड आई एम सॉरी टू ऑल द फिक्शन, मुझे नहीं समझ आता फिक्शन. Non-fiction biographies, real stories, self-help books, and of course, work-related business management. That. And I repeat, the last book always has the best influence on me, unless and until I get on to the next one. But I read every day. That's one thing that I ensure. When I say every day, it means 5 days a week. So that's how I do it. But to answer your question in specific, yes, as I told you even earlier, the running effect is something that changed my course. The other book, The Office Secret by Mr. Harish Bhatt, is something which I really like. Chetan Bhagat, 11 Rules, I really like. Many Life, Many That's Masters, my I really favorite like. one too. Yeah. So yeah, so that's how it is. Thank you so much, sir. Thank you. Because I know I am just like randomly asking you questions and you are so patiently answering them. So thanks a lot. Pleasure. Thank you. And I, as an audience, not just as a host, I, as an audience, I am really enjoying this session because this is just flowing like a story. Because आप हमें सिर्फ चीजों के answers नहीं दे रहे हो. You are just
putting your heart out. You're just telling us everything so pragmatically, which is very overwhelming. Thank you. And we don't want the session to end, but yes, we have to do it soon. And to do before that, there's a question that what can your readers, our audience, your followers and our followers look forward to next? Like, is there a next book coming? Any ideas or ventures on the horizon? Yes, I'm. Um, I think in one of the book discussion, uh, actually two people have pointed this out, and both of them are very respectable to me. The foreword of my last book is written by Dr. Vijay Rai, a very senior medical professional and also a bureaucrat. तो उन्होंने कहा कि एंड ही इज माय स्कूल सीनियर आल्सो, मुझसे बहुत सीनियर है वो। तो उन्होंने कहा कि अब इसको ना ये राइटर्स इच हो गई है, अभी ही विल कीप राइटिंग फॉरएवर। एंड आई जब उन्होंने बोला तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं कि अब तो मेरा मन करता है दैट यू नो आई शुड कीप राइटिंग। एंड सेकेंडली अनदर जेंटलमैन प्रोफेसर कैप्टन एसबी त्यागी who's been a mentor to me, a philosopher and a guide to me. तो उन्होंने भी मुझे बोला कि यू शुड नाउ यू नो कीप राइटिंग। एंड तो मैं इन दोनों से भी इंस्पायर हूँ और वाकई में अब मन करता है लिखने का। तो सो यस, आई एम ऑन फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। एंड आई थिंक आई वुड परहैप्स फॉर द फर्स्ट टाइम मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ कि मैं दो साथ साथ चीजों पे काम कर रहा हूँ। पहला 1000 डेज अ स्टोरी ऑफ मिनट को मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। वो मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ दैट Oh, wow. आई बीन टोल्ड दैट this is actually a movie material, and this book is now being considered to be converted, script to screen पे काम चल रहा है। and I'm told by uh, one of the very one of the top filmmakers of the industry कि यू नो जो हम पहले बात कर रहे थे कि तुम हिंदी में सोचते हो इसलिए हिंदी में लिखो इसको, जब हिंदी में हाँ, लिखोगे तो और इसमें अपनी कन्वर्सेशंस और ऑडियंस इसमें और कनेक्ट कर पाएंगे। तो वो निकल के आएगा। तो मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूँ और मैं ऐसा रियलाइज कर रहा हूँ कि वो स्टोरी अलग हो रही, मतलब अलग मतलब थोड़ा डिफरेंट उस पे जा रही है, बिकॉज द पर्सपेक्टिव ऑफ माय थॉट प्रोसेस, आई एम थिंकिंग लाइफ डिफरेंटली आफ्टर आई फिनिश्ड राइटिंग द सेकंड बुक। तो जब मैं उसको दोबारा लिख रहा हूँ तो वो दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो इट्स नॉट अ ट्रांसलेशन और इट्स नॉट ओनली अ हिंदी वर्जन, इट्स परहैप्स इट इज कमिंग आउट टू बी अ different project altogether. That's one. Second, um, our chairman of our organization, Lieutenant General Sudhir Sharma, after the interview, after the launch of the second book, I mean, he was so kind to launch that book in November. And I was standing with him, and somebody came and was asking, somebody came and asked me, तो कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। एंड बिफोर दैट आई कुड आंसर। तो उन्होंने बोला कि और क्या होगा, अब क्या लिख सकता है, अब तो ये अपना प्रोफेशन, करियर और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में लिखेगा। सो आई अनाउंस इट दैट विल बी हिज नेक्स्ट बुक। तो मुझे लगा कि अरे सर ये तो आपने क्या बढ़िया बात बोली। तो शायद सो आई एम वर्किंग ऑन दैट, हाउ टू पुट इट अक्रॉस इज व्हाट आई एम थिंकिंग इज my idea is not to come up with something which is a gyan kind of a book, but I want to make it and I'm inspired by, as I said, Office Secret by Mr. Harish Bhatt, and he says that Yeah. it is a unserious book. So I'm thinking to collate experience of my 34 years of professional journey into a book. The name is yet to be decided, but that's the second project that I'm working on. It'll be out soon. Wow. Yeah, and I guess we are all very keen. I am personally very keen now to watch 1000 Days story of a minute on screen, on the bigger screen.
And our best wishes are with you and the book, both the books. Uh, Team Story Scrapers wishes you all the best, and our best wishes with you. Thank you so much, sir. Having you with us was is an honor, and we got to learn so many things in a very candid way. Because आपका इंटरव्यू लेने से पहले I had 1,000 thoughts in my head कि मुझे पता नहीं कैसे, मतलब मैं कैसे सवाल पूछूं, आप क्या बताओगे, एंड इफ आई विल बी एबल टू स्टैंड थ्रू आउट, आपको कोई चीज ऐसे तो नहीं लगे कि अरे ये रैंडमली पूछ लिया, अरे, बट योर प्रेजेंस इज सो प्लेजेंट, trust me, it's just amazing. And Thank I you so would much. request you कि please start telling stories on YouTube. थैंक यू सो मच, यू आर रियली रियली काइंड अपनी आपसे इतनी सारी बात पहली बार करी है, बट आई नो यू सिंस फ्यू मंथ्स। और मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि अपनी ने खुद अपने हाथ से मेरे लिए कुछ कार्ड्स बनाए और इन्होंने एक भेजा, और मैंने इनसे ये निवेदन किया कि मैं अगली बार आपसे आके मिलूंगा तो वो मुझे आप पर्सनली दीजिएगा। सो सॉरी अपनी, मैं आपसे लास्ट टाइम नहीं मिल पाया, बट वेन एवर आई एम देयर नेक्स्ट टाइम आई विल मीट यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत बहुत मुझे भी मजा आया आपसे बात करके, एंड इट वाज सच अ प्लेजर। Thank you so much, sir. Thanks a lot. And thank you, थैंक यू। dear audience, for connecting, for joining in. And we will soon put our episode on YouTube. You can like and subscribe Story Scrapers YouTube channel and watch our Conversations Unplugged episodes on it. Keep writing with us, keep reading with us, and keep joining the sessions of Conversations Unplugged. Thank you so much. Have a good day, everyone. Thank you, sir. Thanks a lot. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।